पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है टॉप 10 थिंग्स इंडिया इज फेमस फॉर। आज हम ऐसी 10 चीजें देखेंगे जिसके लिए इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है। मतलब इन चीजों की वजह से इंडिया जाना जाता है, बहुत ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। ऐसे तो इंडिया हर चीज में मशहूर है, लेकिन ये टॉप थिंग्स हम आज देखने लगे हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। India is a mystical country in which you cannot explore it all in a single lifetime. Nowhere in the world you will find the rich and not so rich coexist gracefully. Vast and diverse, one can explore all that it can offer from the temples, seas, mountains, deserts, art, history and heritage and never get tired. Many have the perception that it is a land of snake charmers and dust and diseases. But there is something about this country which draws people from all over the world. अब देखते हैं कौन कौन से 10 चीजें। So here are the top 10 things India is famous for. Number 10. Spirituality. Seeking peace and tranquility in the form of meditation and yoga makes India one of the spiritual hotspots in the world, and people from all over the world travel here seeking peace and enlightenment. Yoga is extremely popular in Western countries along with Ayurveda treatments, and people come and visit the ashrams of sages in northern India hotspots such as Rishikesh and Haridwar for a more authentic experience. Number 9. Colorful clothing. Bright colors are the very soul of India. A country that is so diverse and culturally vibrant, it is perhaps the common, simple expressions of color that hold together the multitudes of outlooks and lifestyles. Wherever you travel in India, you will witness that neither men or women are afraid of color. One just routinely picks up a yellow sari and green shirt and goes about their business without worrying about how bright their clothes are. The people of India are colorful and so are clothes. Number 8. Contribution to mathematics. Albert Einstein said, "We owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made." Famous Indian mathematicians including Aryabhatta and Ramanujan made some of the most important and essential contributions to mathematics, including giving the world the concept of zero. These contributions are admired and respected by scientists and mathematicians across the globe. Number 7. Festivals. India celebrates more festivals than probably any other nation in the world. Being a secular nation, India celebrates the festivals of all religions and that too with a lot of enthusiasm. Some of the more popular festivals include Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Dussehra, Durga Puja, Christmas, Guru Purab, Eid al-Fitr and Eid al-Zuha. Indians are really serious when it comes to preparations for a festival, and that can be seen in the way they celebrate, with open hearts and wide smiles. People travel from various nations across the globe to join in and experience the celebration of the different Indian festivals. Number 6. Cricket. India has one of the most cricket frenzy populations in the world. Although hockey is the national sport of the country, cricket is the most popular among Indians. The Indian cricket team, or the men in blue, have won 3 major world championships in different formats of the game. India has produced some of the finest cricket players in the world, including the likes of Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Anil Kumble, Sunil Gavaskar, and Kapil Dev, among many others. Recently started, the Indian Premier League is one of the most watched sporting events around the world. The sport is played by kids, teenagers and adults in the streets and open spaces of almost every locality in the country. This crazy love Indians have for this sport is recognized by people across the globe. Number 5. Rich culture. India is the most culturally diverse country in the world. From north to south and east to west, there are thousands of different cultures followed in the country. India's languages, religions, dance, music, architecture and customs differ from place to place in the country. This is not very well known, but 4 of the major religions of the world, Hinduism, Sikhism, Buddhism and Jainism, originated in India, and almost all the different religions are followed by the people in India. Perhaps the rich and deep history is the reason for such a strong cultural diversity. This aspect attracts thousands of tourists who visit various states every year. Number 4. Spicy food. Food is a subject of intrigue among many foreigners and is loved by all. The addition of spices which are not present in continental and American cuisine succeeds in making the food taste considerably different and much tastier. The variety that you can get on the food menu of an Indian restaurant is simply unparalleled to any other country's cuisine. Number 3. Taj Mahal. How could we ever forget the iconic Taj Mahal? One of the 7 wonders of the world and an immortal symbol of love made by Mughal
Emperor Shah Jahan in the honor of his beloved wife. Made out of pure white marble, this monument is a visual treat, and the thought process put into design the architecture is simply outstanding. It is the most visited landmark in India, and tourists flock in here to catch a glimpse of this masterpiece. Wow. Number 2. Bollywood. India is also home to the Hindi film industry, more popularly known as Bollywood. The film industry was originally started in Mumbai, and its presence is still the strongest. Earlier, the films produced by the industry used to be released and viewed by domestic audiences only. But probably since the last decade, the films have started being released and also praised internationally in many countries. The film industry has given the world some of the finest actors and filmmakers. Number 1. Population. ये तो India बात is the है। second most populous country in the Population तो world, famous second है। only to China with more than 1.2 billion people. A massive population provides अभी तो many 1.4 challenges हो such गए as हैं। proper infrastructure for an individual's growth and development, basic amenities, and so on. Still, the government manages to do a pretty good job at managing such a huge population. It is an added bonus for many developed countries who outsource jobs to India, since there are a large number of skilled workers available at considerably cheaper rates than in their native countries. That's it. ऐसे ही था। तो यार गाइस ये वीडियो खत्म। तो ये चीज थी 10 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ऐसे तो पूरा इंडिया मतलब हर वजह से फेमस है, लेकिन ये 10 पॉइंट थे जो पूरी दुनिया में मतलब जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा योगा हो गया, देखो योगा हो गया इसमें। पूरी दुनिया में इसमें मैं आपको सबसे ज्यादा भाई इम्पोर्टेंट जो मतलब कोई भी बता सकता है कौन से पॉइंट थे। योगा, फेस्टिवल्स, क्लोथ्स, क्रिकेट, डाइवर्सिटी, बिल्कुल। अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्लोथ्स भाई हो ना हो, स्पाइसी फूड लाजमी होगा। स्पाइसी फूड तो लाजमी होगा। स्पाइसी फूड लाजमी होगा, और पॉपुलेशन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताजमहल, ये कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप किसी भी फॉरेन को पूछ लो, मतलब दुनिया में किसी बच्चे से भी पूछ लो यार, आपको बता देगा कि ये। क्योंकि अगर बाहर चले जाओ ना किसी भी देश में, चाहे मैं कहता हूँ दुनिया के किसी देश में चले जाओ, उनसे अगर सवाल पूछो ना तो वो 3 का लाजमी जवाब देंगे। वो अगर उनसे पूछो ना वो कहेंगे एक फेस्टिवल उनको, और बॉलीवुड में और फेस्टिवल में और किसी का नाम आया ना आया, दीपावली या होली का जरूर आएगा। दिवाली और होली का नाम आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत और पूरी दुनिया में आप जोशो खरोश से दिवाली मनाई जाती है। योगा जिससे पूछो, पहले यार हम जैसे बंदे मतलब स्पाइसेस फूड इंडिया का लाजमी उनको पता होगा, क्योंकि यार फूड पूरी इंडिया का पूरी दुनिया में मतलब चलता है। बिल्कुल। और भाई मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान इंडिया ने दिया। अलजबरा, पाई की वैल्यू, पता नहीं कितनी चीजें यार इंडिया मतलब इंडिया ने इन्वेंट किया। और आइंस्टाइन ने भी बोला था हम बहुत आभारी हैं मतलब इंडियंस के कि उन्होंने मैथमेटिक्स में। और यार एक ऐसी बात है, पता है क्या, इंडियन अगर तारीख अचीवमेंट बहुत पुरानी है। मतलब ये तो अभी गोरे लोग और ये सारे मतलब अभी समझो उनकी तरफ आ रहा है ना, तो जो आज से हजारों साल पहले 400-500 साल पहले वो कर चुके थे। गोरों ने अभी आके इन्वेंट किया। तो इंडियन भाई शुरू से इन्वेंशन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो गाइस आप लोग बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा, और कौन से पॉइंट्स आपको कमाल के लगे वो कमेंट सेक्शन में, और कौन से पॉइंट इसमें ऐड और करने चाहिए थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।